Jai Shri Hari. Shiva, can you spotlight me, please? Am I audible? Jai Shri Hari, everyone. Can you hear me? Um, okay. Can I get a thumbs up that I'm audible? Awesome. Thank you, team. A very warm welcome to the second session of the Yog Sadhana series. It's beautiful that you all could be here in the morning. Well, good morning to you if you're joining from India. Good evening if you're from the US, and good afternoon to everybody that's joining from Australia or New Zealand. We received an amazing, overwhelming response for the first session, and we are back again. Thank you for allowing us to be in your living rooms. It was a wonderful session. You all enjoyed it, you all loved it. So we thought we should continue these series to you know, help you with yoga and so that you can progress on your path of sadhana. So I'm joining from Sydney, Australia. Would love to hear in the comments where all of you are joining us from, because I saw the questions that you've entered, and it seems like we have people from across the world. And I feel that's the power of internet, that we're all connected, we can all do this together. And I will be handing over to Ankurji, who will be driving the session forward for us today. But before that, just a couple of things. Tons and tons of gratitude to everybody who's part of this journey. I'm not sure whether you know me, so my name is Priyanka Anand. I am the CEO of Vedic Sadhana Foundation. Our mission is to revive the Vedic glory of India and making it accessible to everybody through technology. We are spending 8 hours a day on our devices. So we thought we need to be where you are. And that's why we have a number of offerings. So if you're a user of Sadhana app, if you're a user of Tantra Sadhana, we have more than 1 million downloads. We have more than 250,000 people who use Sadhana app, Tantra Sadhana, and a number of offerings from Vedic Sadhana Foundation. We have built all of these things for you so that spirituality can be on the palms of your hands, on your fingertips, with you wherever you go. So you're not restricted by where you are in this world. And this session is another attempt so that we can impact your beautiful lives. So thank you for being here. And hopefully, the next session, the next 30 minutes, you've already made an effort to be here. So please stay with us for the next 30 minutes, benefit from everything that you learned today. If you missed out the session, the first session, it was very well received. There were a lot of asanas that were practiced. So the link will be in the comments. You can go and visit that session. But this session is all about breath work. And Ankurji is certified into breath work. So it's amazing to always learn from an expert. Ankurji, are you here with us? Jai Shri Hari. Jai Shri Yes. Hari, Ankurji. How are you this morning? Yeah, it's very good. It's very cold in here. Okay, So, since yesterday evening, it has been a very chilly winds, and suddenly the weather has turned completely. amazing. So it's very hot where I am. It's cold where you are. Amazing that, we're in different parts of the world right now, but we can still do this session together. So thank you. And people enjoyed when you answered the question. So I hope we can, and there are a number of questions that have come through. So hopefully I will be asking those to you towards the end of the session. And everyone, please stay because we have amazing responses coming for all of you. So over to you, Ankurji. Thank you so much for guiding us. And I will be on mute and please drive the session forward. Thank you so much. So, Jai Shri Hari. सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम है. My pranams to all of you. And so today we're going to have a session on Prana Śuddhi. So in last session, जो हमने पिछला सेशन किया था वो था शरीर शुद्धि पे, that how to do sadhana for a longer period of time. हमें अपने शरीर को कैसे मूव करना है, how we can do few practices which will help us deepening our sadhana, and also जो हमें बहुत देर तक स्थिर बैठने में, अगर हम 1 घंटा भी बैठ सके उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसमें हेल्प करेगी. उसी प्रकार सेम वे टुडे वी हैव अ प्रैक्टिस ऑन प्राण शुद्धि.
तो आज की जो हमारी प्रैक्टिस है वो प्राण शुद्धि पे है कि हाउ ब्रीदिंग अफेक्ट्स आवर बॉडी एंड माइंड। कैसे जो प्राणा है वो हमारे शरीर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम पहले मूव करें टॉपिक पे कि आज हमारा क्या क्या, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और किन चीजों को समझने वाले हैं बिफोर वी गो फॉरवर्ड विथ दैट व्हाट प्रैक्टिसेस वी गोना डू टुडे। And before that, we're going to do Guru Stuti. And after that, we're going to move forward into the session. So wherever you are, sit straight. आप जहां भी हैं सीधे बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। Close your eyes, mind straight, a gentle smile on your face. And do Guru Stuti. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gururdevo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. I offer my obeisance in the divine feet of my Guru Om Swamiji, and I offer my obeisance to the divine in me, with whose grace we all are here at this moment for this beautiful session. Narayan. So today we're gonna understand about pranayama. आज हम समझने वाले हैं प्राणायाम के बारे में कि कैसे प्राणायाम जो है हमारे मन को, क्योंकि जब एक साधक साधना करने बैठता है तो उसका मन ही है जो उसके साथ, या तो उसके साथ हो सकता है या उसके अगेंस्ट हो सकता है। सो व्हेन वी आर डूइंग साधना, it's our mind, it's our thoughts, so you know which will either be with you or which will be for you or against you. And once you understand that what is prana and what is pranayama, then you can really take charge of your mind, and your sadhana can really go into the deeper state. तो एक बार अगर आप प्राणायाम को समझ जाते हैं, प्राणा को समझ जाते हैं, तो जो आपके थॉट्स हैं, जो आपका मन है, आपके पास एक ऐसी पावर आ जाती है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एक इतना बड़ा हाथी होता है, उस पे जब एक महावत बैठता है तो उसके हाथों में एक बहुत छोटा सा अंकुश होता है। तो अगर वो हाथी थोड़ा सा भी आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो महावत वो अंकुश से उसको कंट्रोल कर लेता है। तो हाथी बस एक स्ट्राइक से ही रुक जाता है कि ओके, आई हैव टू बी इन सर्टेन डिसिप्लिन, आई कैन नॉट गो हेवायर। सो व्हेन elephant, a person who rides elephant or who rides elephant is sitting on the elephant, he has something called ankush, which is to control the elephant. So if the elephant is going haywire, then he has that ankush, he can just put once, strike once slowly and gently, and that elephant will know that, okay, now I'm going indisciplined or I'm going a little wider, I have to be in control. Same way that prana is the ankush, we have to control our mind. उसी प्रकार ये जो प्राण है, ये अंकुश है हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए। और हम आगे बढ़े उससे पहले सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि प्राणायाम का मतलब क्या होता है। तो प्रा मीन्स होता है कांस्टेंट। द मीनिंग ऑफ प्रा इज कांस्टेंट, एंड ना, अना का मतलब होता है मूवमेंट। सो कांस्टेंट मूवमेंट को प्राणा बोलते हैं। प्राणा इज नॉट ब्रीदिंग, प्राणा इज वेरी सटल। जो प्राणा है बहुत सूक्ष्म होता है। प्रा का मतलब होता है जो मूवमेंट है, गति में है। और अना का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट मूवमेंट पे है। तो प्राणा मीन्स कांस्टेंट, अना मीन्स मूवमेंट। ये कांस्टेंट एक मूवमेंट है, प्राणा कभी जाता नहीं हूं कहीं। ब्रीदिंग इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राणा। तो जो हम ब्रीदिंग करते हैं, श्वास लेते हैं, ये एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है प्राणा। तो वो इंग्लिश में प्राणा के लिए कोई शब्द नहीं है। सो व्हेन वी से प्राणायामा, यमा, आयाम मीन्स टू कंट्रोल।
जब आप अपने प्राण को कंट्रोल्ड वे में ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं अवेयरनेस के साथ, वो प्राणायाम हो जाता है। जब हम हमें ज्ञात नहीं है, when we are not aware of our breathing, when there is no control of our breathing, then that is not pranayama, then that is just a normal everyday breathing and breathe out. But once we do pranayama, it means now we are trying to control our breathing. तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी श्वास को, अपनी लाइफ फोर्स को कंट्रोल करना चाहिए। और हठ योग प्रतिपदा में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, चले वात चले चित्तम निश्चलम निश्चलम में, कि जैसे जैसे हमारे शरीर में वायु चलती है, इसी प्रकार हमारा मन भी इधर उधर भागता है। सो दिस वर्स इन हठ योग प्रदीपिका सेज दैट चले वात चले चित्तम, कि जिस प्रकार, जस्ट लाइक हाउ air is moving in our body, our mind is also moving. So if we have very fluctuating breathing, if we have a very tensed breathing, if we have a very frustrated breathing or very fast breathing, our mind will never be calm. And if we have very shallow breathing, like like this, अगर हमारी breathing बहुत shallow है, तो फिर हमारा माइंड एकदम डल रहेगा, उसमें ऊर्जा नहीं रहेगी। सो दैट्स व्हाई प्राणायाम बिकम सो इम्पोर्टेंट। इसलिए जो प्राणायाम है वो अपने आप में एक अद्भुत साधना है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिससे हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं, अपने मन का चार्ज ले सकते हैं। और प्राणायाम जो है, प्राणा है, 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, ध्यान। तो जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, हम सोचते हैं एक ही ब्रीदिंग है, वो तो फिजिकल है। लेकिन 5 प्रकार के मुख्य प्राण है, ऐसे तो 10 प्रकार के हैं, लेकिन मुख्यतः 5 है। तो प्राणा क्या है? जो अपवर्ड मूविंग एयर है, हम जिससे रेस्पिरेशन करते हैं, द ब्रेथ फ्रॉम विच वी ब्रीथ इन, दैट इज प्राणा। एंड देन अपाना, जो हमारे बॉडी में डाउनवर्ड मूविंग एयर है, जिससे एक्सक्रीशन होते हैं, जिससे हम वॉशरूम जाते हैं, जिससे हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, वो अपान वायु है, वो अपान वायु का कार्य है। तो प्राण, अपान, समान, फिर एक समान वायु है जो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करती है, जो एक बॉडी को समान में रखती है, डाइजेशन पे स्पेशली काम करती है, समान वायु। फिर एक उड़ान वायु है। तो जो उड़ान प्राणा है, वो अपवर्ड मूविंग प्राणा है, वो नेक टू ब्रेन मूव करती है, ओनली फ्रॉम नेक टू ब्रेन, दैट्स उड़ान वायु। उसके बाद जो व्यान है, वो थर्मल एनर्जी है, वो पूरे शरीर में, वो एक्सट्रीमिटीज में घूमती है, हमारे हैंड्स में, हमारे लेग्स के एक्सट्रीमिटीज में, और एक थर्मल एनर्जी है। सो वो व्यान है। तो सोचिए, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो केवल हम सांसों को ही ठीक नहीं करते, हम ये 5 प्राणों को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, वो प्राणायाम है। तो आज का जो हमारा अभ्यास है, वो फोकस रहेगा बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस में। जब भी मैं सिंपल बोलूं तो ये नहीं सोचिएगा सिंपल, सिंपल का मतलब है मोर पावरफुल, नॉट कॉम्प्लेक्स बट वेरी पावरफुल। और जो देखने में तो सिंपल है, लेकिन उसका नित्य अभ्यास अगर आप करेंगे, देन इट कैन जस्ट चेंज द स्टेट ऑफ योर माइंड एंड योर थॉट्स। सो आज हम 4 प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। सो विल डू कपाल भाती, और उसको सही तरीके से करने का तरीका। उसके बाद हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग, अपने पेट से सिर्फ श्वास को इनहेल और एक्सेल करना है। उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, और उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी। ये 4 प्रैक्टिसेस हम करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक एक प्रैक्टिसेस समझा दूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूं कि हम 10 मिनट्स बिना किसी डिस्टरबेंस के वो प्रैक्टिसेस को करें। एंड आई विल बी गाइडिंग यू, मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा वो प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन मैं पहले सबको समझा दूंगा कि देन 10 मिनट्स विदाउट टॉकिंग वी कैन जस्ट इंडल्ज इन प्रॉपर प्रैक्टिस। तो ये 4 प्रैक्टिसेस हम करने वाले हैं। और हम प्रैक्टिसेस का आरंभ करें, वी बिगिन द प्रैक्टिस। बिफोर दैट, फॉर फ्यू सेकेंड्स जस्ट क्लोज योर आईज एंड वॉच हाउ यू ब्रीथ। अपनी आंखों को बंद कीजिए फ्यू सेकेंड्स के लिए। आप मेरे साथ हैं जो भी लोग, या आप बाद में भी अगर जो लोग देखें इसको, आंखें बंद कीजिए
और जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए और ये देखिए अभी आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ये ऑब्जर्व कीजिए आपकी ब्रीदिंग कैसी है। तो जब आप इसको ऑब्जर्व कर ले फ्यू सेकेंड्स में, अपने आप को 1 to 10 में रेट कीजिए कि आपकी ब्रीदिंग कैसी है। फॉर एग्जाम्पल 10 being आई एम परफेक्ट, माई माइंड इज एट परफेक्ट स्टेट, दैट इज 10। एंड फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 will be like, no, I'm not in a calm state, my breathing is very shallow, it's not deep. So observe yourself and rate yourself right now, because after the session you will know that now what you are stating after the practice, and practice sincerely, because at the end we have very important questions। सेशन के अंत में बहुत ही important questions हैं जिसको हम आंसर करने वाले हैं। And 1, 2 practices which are very important for everyday sadhana, so be with us and just observe। I'm giving you 30 seconds of time, observe yourself। So now you have observed yourself। अभी आपने अपने आप को ऑब्जर्व कर लिया है। So after the session, how you feel the change in your mind and your thoughts in your body? So we will try to rate that। So today practice we gonna begin with कपाल भाती। आज का जो अभ्यास है हम कपाल भाती के साथ करेंगे। तो कपाल भाती हम कैसे करते हैं? कपाल भाती अगर आप प्रेगनेंसी में हैं और इफ यू हैव वेरी हाई ब्लड प्रेशर और इफ यू हैव हार्ट इश्यूज, तो आपको बहुत फोर्सफुली नहीं करना है, और जो प्रेगनेंसी में है उनको तो करना ही नहीं है। सो अभी हम कपाल भाती समझते हैं कि कपाल भाती को करते कैसे हैं, कपाल भाती के अभ्यास को। तो सबसे पहले वी हैव टू सिट स्ट्रेट। आप अपने ध्यान को अपने नेवल पे लेके जाएंगे एंड यू विल जस्ट एक्सेल। यू विल ब्लो एयर एंड एक्सेल दिस। सो आपको एक्सेलेशन करनी है और स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होगी आपकी। Like if you do very fast Kapalbhati, it's going to create a lot of problem for you। So we're going to do, तो कपाल भाती बहुत हम स्लो प्रैक्टिस करेंगे 10 काउंट्स में। तो आप मेरे साथ 10 बार कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने ध्यान को नेवल पे लेके आएंगे और बहुत ही स्लो हम लोग एक्सलेशन करेंगे। एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सो ये हमारी कपाल भाती की स्पीड होने वाली है जब हम कपाल भाती का प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम बिगिन करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ, जिसमें हमको श्वास सिर्फ अपने नेवल से लेना है। सो व्हेन वी आर ब्रीदिंग इन, विल ब्रीद इन वन। तो जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो जो हमारा नेवल है वो बाहर की तरफ जाएगा, और जब हम ब्रीद आउट करेंगे जो हमारा नेवल है वो अंदर की तरफ आएगा। सो अगेन, व्हेन वी ब्रीद इन, navel goes out, the abdominal go out, and when we breathe out, जो हमारा टमी है वो अंदर की तरफ आएगा। So when we are breathing in, our tummy goes out, and when we breathe out, when we exhale, tummy goes in। So this is abdominal breathing।
अब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्यों करते हैं? बहुत ही एक सिंपल सा रीजन है, बिकॉज हमारे शरीर में दो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब भी हम आप देखेंगे, हम अगर आपको बोलते हैं कि डीप ब्रीद इन, तो अधिकतर हम चेस्ट मसल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत छोटी सांस लेते हैं चेस्ट से, ब्रीद इन, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल डू दिस। अधिकतर लोग क्या करेंगे, बस ब्रीद इन जब बोलेंगे विल डू, और वहीं रुक जाएंगे। तो जब हम चेस्ट से ब्रीद करते हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इनहेल एंड एक्सहेल कॉन्स्टेंटली, तब क्या होता है, हमारे शरीर में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है, और उसका काम है फाइट एंड फ्लाइट। तो अगर आपका सिस्टम 24 घंटे फाइट एंड फ्लाइट में है, मतलब आपके थॉट्स जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आपका मन शांत नहीं रहेगा, और शरीर में स्ट्रेस बढ़ेगी आपकी। दैट इज द वे। बट वेन वी ब्रीद इन फर्स्ट फ्रॉम द टंग, and then we slowly take that breathing to our chest completely, that becomes the deep breathing. For example, now if we deep breathe in using our tummy first, so we breathe in from our tummy, abdomen, and then we take here, and then we breathe in one more using our clavicle muscle. Then it's a complete yogic breathing. And gently we exhale. ये full yogic breathing है. पहले we breathing from our abdomen, then chest, and then we use clavicular muscle. That is complete breathing, complete yogic breathing. So, but right now we are focusing only on abdominal breathing. So right now when we breathe in from our abdomen, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. So what happens? Our sympathetic nervous system gets activated, and sorry, parasympathetic nervous system gets activated. That is the meaning of that system. The work of that system is that it means rest and digest. So if you are breathing, अगर आपको हैबिट हो जाए अपने एब्डोमेन से कॉन्स्टेंटली ब्रीदिंग करने के लिए, इफ यू गेट द इन द हैबिट ऑफ ब्रीदिंग फ्रॉम योर एब्डोमेन 24 आवर्स, देन 24 आवर्स जो हमारा सिस्टम है वो क्या चीज में है, रेस्ट और डाइजेस्ट में। और बॉडी अपने आप को रिपेयर किसमें करती है, जब वो रेस्ट और डाइजेस्ट में होती है, जब पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, तभी हमारी बॉडी रिपेयर मोड में है। सो वी नीड टू कल्टिवेट द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीदिंग फ्रॉम आवर एब्डोमेन। उससे हमारा ध्यान भी लगेगा, हमारे थॉट्स भी कम होंगे, मन भी शांत होगा, मन भी नहीं भागेगा। और हम जब साधना करते हैं तो हमारी जो साधना है वो अच्छे से हो पाएगी और डीपेन हो पाएगी। तो उसके लिए हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं। उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन का अभ्यास। अब नाड़ी शोधन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले सिंपल, हमें कोई मुद्रा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। वी हैव टू जस्ट क्लोज आवर राइट नॉस्ट्रिल। हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे, क्लोज करेंगे, और बहुत ही जेंटली हमें ब्रीद इन करना है, नॉट फोर्सफुल। इट शुडंट बी नॉट दिस, इट शुड बी वेरी जेंटल लाइक दिस. So we have to breathe in 3 seconds, for example, 1, 2, 3, and exhale 4 seconds. We breathe in from right again, breathe in for 3 seconds, and we exhale to left for 4 seconds. So this is one round. First we breathe in from left, and then we exhale from right. Again, we inhale from right, and we exhale from left. That is one round. So we will practice 5 rounds of this. And after this, we will do Brahmari Pranayama. So Brahmari Pranayama, what we have to do? We have to just close our ears. You will see a lot of mudras. You don't have to do that or keep your hands there. You just close your ears so you cannot hear anything. And you breathe in for 2 seconds or 3 seconds. Like for example, breathe in and exhale for at least 7, 8 seconds. For example, we breathe in for 2 seconds, breathe in, and exhale with humming sound. Mm.
So I inhaled for 2 seconds and exhaled for 10 seconds. तो मैंने 2 सेकंड के लिए इनहेल किया और जो हमिंग साउंड है धीरे धीरे ब्रेथ को उसके साथ एक्सेल किया 10 सेकेंड्स के लिए। तो इनहेलेशन जब हम एक्सेलेशन को इनहेलेशन से लंबा रखते हैं तो बॉडी और काम होती है और शरीर में बहुत सारे लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर को और स्वच्छ करते हैं, डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। सो ये 4 प्रैक्टिसेस हैं हमारे आज के, और अब हम इन प्रैक्टिसेस को साथ में करेंगे। तो सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति इसीलिए कि जो भी हमारे अंदर स्टेल एयर है, बासी हवा है, वो बाहर की तरफ चल जाए। सो लेट्स डू 10 काउंट्स और ऑफ 3 कपालभाति। तो मेरे साथ हम एक साथ अब हम अभ्यास करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे अब हम। सो आप अपना ध्यान पूरा अपने नेवल पे लेके आइए एंड वी विल स्टार्ट कपालभाति। जब मैं एक बोलूं 1, you will exhale and pull your navel back. Then when I say 2, 3, इस तरीके से हम करेंगे। तो चलिए अपने राइट हैंड को अपने नेवल पे रख लीजिए कि आपका ध्यान आपके नेवल पे हो। यू कैन क्लोज योर आईज एंड जस्ट लिसन टू माय इंस्ट्रक्शन एंड डू इट विथ मी। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स, अपनी आंखें बंद रखिएगा। डोंट मूव, सीधे बैठे और अपने आंखों को बंद करें। वी विल डू दी सेकेंड वन। अगेन 1, exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Keep your eyes closed. There is no rush. आपका पूरा ध्यान आपके नेवल पे रहे। If your awareness is going somewhere else, bring it back to your navel. अपने ध्यान को अगर कहीं भटक रहा है तो उसको वापस अपनी नाभि पे ले आए। We'll do last round of Kapalbhati. 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and relax. अपनी आंखें बंद रखिएगा। Don't open your eyes, keep your eyes closed. अब हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नाउ व्हाट वी गोना डू, वी गोना डू दी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। उसको कैसे करना है, अपने राइट हैंड को फिर से नेवल पे रखेंगे वेरी जेंटली और हम समवृद्धि करेंगे। ये हमने 2 सेकंड के लिए इनहेल करना है, इन 2 सेकंड के लिए एक्सेल। अगेन 2 सेकंड इनहेल, 1, 2 एंड 2 सेकंड एक्सेल। और हमारा सिर्फ एब्डोमिनल मूव होना चाहिए, एब्डोमेन मूव होना चाहिए। सो व्हेन वी आर ब्रीदिंग इन, आवर tummy goes out. When we are breathing out, tummy goes in. So we will do practice 5 counts of 3 sets. तो अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उसको नेवल पे रखिए और मेरे काउंट के साथ 2 सेकेंड्स में इनहेल, 2 सेकेंड्स में एक्सेल। कीप योर आईज क्लोज्ड। ब्रीथ इन and exhale. 2 seconds. Breathe out. Breathe in. Breathe out. When you breathe in, tummy goes out. Breathe in. When you exhale, your tummy goes in. Breathe out. Be gentle. Breathe in 2 seconds.
and exhale, breathe out. And relax. Keep your eyes closed. अपनी आंखें बंद रखिए. फिर से हम ब्रीदिंग ब्रीद आउट करेंगे. Abdominal breathing. 2 seconds breathe in, 2 seconds breathe out. Breathe in, 1, 2, exhale, 1, 2. Breathe in, 1, 2, exhale, 1 and 2. Breathe in, 1, 2, exhale, 1 and 2. Breathe in, 1, 2, exhale, 1 and 2. Relax. Keep your eyes closed. अपनी आंखें बंद कीजिए. We will do one last round of abdominal breathing. अपने ध्यान को अपने navel पे रखिए and be very gentle. Again, 2 seconds inhale and 2 seconds exhale. Breathe in, 1, 2, exhale, 1 and 2. Breathe in, 1, 2, exhale, 1 and 2. Breathe in, 1, 2, exhale, 1 and 2. Breathe in, 1, 2, exhale, 1, 2. Breathe in, 1, 2, exhale, 1, 2. And relax your hands and keep your eyes closed. Just be aware of your breathing. अपनी आंखें बंद करके रखिए और अपने बस ध्यान को अपनी सांसों पे. Be aware of the natural movement of your breathing. अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम. Now we will do नाड़ी शोधन प्राणायाम. So let's close our right nostril first with our thumb. अपने right nostril को close कीजिए. Again, we will breathe in 2 seconds and breathe out. Exhale 2 seconds. So we start from inhale from the left nostril. So keep your eyes closed and just follow my instruction. अपनी आंखें बंद रखिए. अब अपने अंगूठे से अपनी दाएं nostril को बंद कीजिए. Close your right nostril gently and inhale from your left nostril. Breathe in and exhale. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Relax. Keep your eyes closed. अपनी आंखें बंद रखिए और अपने ध्यान को अपनी सांसों पे.
Again, we'll start breathing from left and again exhalation from right. So breathe in, exhale, right? Inhale from right, exhale from left. Inhale from left, exhale from right. Inhale from right, exhale from left. Be gentle when you inhale and exhale. Inhale from left, exhale from right. Inhale from right, exhale from left. Inhale from left, exhale from right. Inhale from right, exhale from left. Inhale from left, exhale from right. Inhale from right, exhale from left. Relax. We have done 10 counts and we will do last count. So before that, just relax and watch your breathing. Again, we start with the left nostril inhalation. Start inhalation from left, exhalation from right. Inhale from right, exhale from left. Inhale from left, exhale from right. Inhale from right, exhale from left. Inhale from left, exhale from right. Inhale from right, exhale from left. Gentle inhalation and exhalation. Inhalation from left, exhalation from right. Inhale from right, exhale from left. One last time. Inhale from left, exhale from right. Inhale from right and exhale from left. And relax. Keep your eyes closed. अपनी आंखों को बंद रखिए और अपने शरीर को वॉच कीजिए. Watch your mind that how calmer and better it is. Watch your breathing now, how rhythmic it is, how deep it is. अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए. देखिए कि अब आपका मन पहले से कितना शांत है और फोकस्ड है. आपका जो शरीर है और स्थिर है और जो श्वास का मूवमेंट है, ब्रीदिंग का मूवमेंट है, वो कितना रिदमिक है और डीप है पहले से. जस्ट ट्राई टू वॉच. नाउ विल डू भ्रामरी. अब हम भ्रामरी करेंगे. आंखें बंद ही रखिए. बस इतना ध्यान रखना है हमें कि हमें इनहेल करना है 2 सेकेंड्स में और एक्सेल करना है लंबा 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड्स, जो हम ब्रीदिंग कर सकते हैं. और जब हम भ्रामरी करें, ज्यादा लाउड नहीं होना है, जेंटल रहना है. तो मेरे साथ कीजिएगा. हम इसका अभ्यास 3 बार करेंगे और जब आप खुद से अभ्यास करें, आप इसको
5 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। और एक बार आपके अभ्यास बहुत अच्छा हो जाए, रेगुलर प्रैक्टिस, देन यू कैन ऑल्सो डू इट फॉर 21 टाइम्स। सो लेट अस डू 3 टाइम्स भ्रामरी। तो हम अपने कानों को बंद कर लेंगे और आपको सुनाई नहीं देगा। अब आप कान बंद कर लेंगे तो आपको कान बंद करना है अपने ही पेस में। आप ब्रीथ इन कीजिएगा 2 सेकेंड और एक्सेल लंबा। तो मैं अपना अभ्यास करूंगा और जब वो पूर्ण हो जाएगा हम आगे बढ़ेंगे। सो ब्रीथ इन जेंटली, breathe in gently, 1, 2. एक लास्ट बार, 2 सेकेंड, and exhale with one inside gently and loudly. धीरे से 3 राउंड के बाद हम अपने हाथों को हटा सकते हैं और हम कुछ देर तक शांत बैठ सकते हैं जब हम अभ्यास करें। और उसके बाद फिर हम या साधना कर रहे हैं तो साधना कर सकते हैं, या हम जो भी कार्य कर रहे हैं दिन का, अपना जो भी दिनचर्या है हमारी, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस 4 प्रैक्टिसेस वी कैन डू आवर साधना, और वी हैव एनी एक्टिविटी फॉर द डे वी कैन गो अहेड विद। सो जो अभी आपने मेरे साथ अभ्यास किया, आप अब देखिएगा, अगर आप मेरे साथ थे अभी लाइव और कर रहे थे, तो देखिए इस अभ्यास के बाद आपका माइंड कैसे एक्टिव है या शांत है, आपके थॉट्स कम है कि ज्यादा है, और आपका फोकस कैसा है। और अगर इफ यू गोना प्रैक्टिस आफ्टर दिस, after you'll be watching this video later, and then also you see your state of mind before and after the practice, so that will help you understand that how these practices are so powerful। वो आपको ये समझने में मदद करेगा कि ये जो practices हैं वो अपने आप में कितने प्रभावशाली हैं और शक्तिशाली हैं। सो ये था प्राण शुद्धि। और अगर आपने पहले के सेशन नहीं किए हैं इसके, जो कि शरीर शुद्धि था, जो कि अगर मैं अभी कमेंट में बोल देता हूँ, वहां पे टीम जो है हमारी वो लिंक डाल देगी। सो इफ यू हैव मिस्ड द लास्ट सेशन ऑन शरीर शुद्धि, बॉडी प्यूरिफिकेशन, सो लिंक विल बी हियर ऑन द कमेंट। यू कैन गो देयर and watch the first session prana shuddhi, and then you can again do that practice, and again you can come back to this video and practice this also. So this was about pranayama, and now and the practices we decided to do. So now let us move ahead with the question। अब आपके जो भी क्वेश्चन है हम उसको लेते हैं कि वो क्या क्वेश्चंस हैं, और उसको हम एड्रेस करते हैं। Guruji, thank you so much. As always, I think the one thing that really stuck with me was कि हम लोग सांस लेना भूल जाते हैं. You know, we are breathing, but we don't know how to breathe properly. And just what you taught us, if there is a way that we can all be aware and mindful of our breathing, because I know that whenever you and I have had any conversation, you're always telling me you're not breathing properly, you're not breathing from your belly, you're only breathing up until here, your observation. So I think it's so important that all of us can be aware. I have lots of questions, but we will stick to, you know, the questions that are most recurring from everyone. But I want to add one question in there from me, and it's all about breathing. हम अवेयर कैसे रह सके? How can we inculcate that practice of awareness
कि हमें याद रहे हमें सांस कैसे लेनी है, बिकॉज देर इज सो मच डिमांड ऑन द टाइम, we're always occupied doing something. अगर कोई हाउस वर्क कर रहे हैं तो वो भूल जाते हैं, like it's, we just feel that this is something that is happening, but then you always say that that relates to a lot of other problems. Like we were talking the other day and you said to me, the gut is also a brain. Yeah. And you know, when you're in stress, the entire system shuts down. So how can we be aware, and how do we remind ourselves that we need to be breathing properly? Is there any tips or techniques you can share? That's a beautiful question. So, one thing in yoga, we say that breath is the only system which is automated, also automatic, and also something you can control. Other things you cannot. But breathing happens. If you don't want to, then also it happens. But it's the same thing which you can control also. So you asked the question, how do we be aware of breathing? So that's the power we have, that we can regulate our breathing. That's the advantage we have, that we can regulate our breathing. So very simple thing. After every 30 minutes, you have to stop for 1 second, pause for like 1 minute or 30 seconds, and just see how you're. And if you see you are breathing faster, that means you're not breathing properly. If you see you're breathing from chest, you're not breathing properly. So every 1 hour or 30 minutes, when you begin, after that it will become automatic. Like जैसे हमें आदत हो गई है गलत ब्रीदिंग करने की हमारे सिस्टम को, तो जब हम एक बार रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो सिस्टम को सही चीज करने की भी आदत हो जाती है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम. सो एवरी 1 hour वी कैन जस्ट pause, relax. We can put a timer on our phone, alarm that pause. And once that timer rings, you pause and you watch your breathing. And if you see that you're watching in a wrong way, you don't have to invest a lot of time. Just 1 minute, sit and do abdominal breathing. Be aware of your breathing. So once you do this, if people who are watching this, they will see in 1 week the significant improvement in their concentration, in their breathing patterns. So yeah, this is one thing everybody can do. That's amazing. I think that's it. I'm putting a timer on my phone. That was quite practical to do. So thank you. Okay. So now moving on to the questions. एक जो बहुत common question था from our last session, it was around how to sit longer during meditation. या अगर कोई हमारी साधना चल रही है, या if we are practicing ध्यान या meditation, how do we sit longer? Because a lot of people have back pain issues, knee issues, and we want to do more of sadhana, more of meditation. So, can you guide us there, please? I think so. Sitting depends on lot on your physical health. So जब हम साधना की बात करते हैं तो physical health also become as important as our sadhana, whatever sadhana we do or breathing we do or mantra we do, because body is the vehicle. Body is not something which should become a problem or a hindrance to our sadhana. Body is something which should become a stepping stone on the path of sadhana. तो जो शरीर है वो एक stepping stone होना चाहिए, that we can move forward in sadhana. And how do we do that? We do that simply. I was also looking at the question. People have a lot of back issues, and for sitting longer, you need to have a very strong back. And how that strong back will happen if you practice asana. जैसे हमने लास्ट सेशन में एक पोज किया था, 2-3 पोज किए थे जिसमें स्पाइन की डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट थी. तो जब स्पाइन कंप्रेस्ड रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो हम बैठ नहीं पाएंगे ज्यादा. तो अगर हम जैसे लास्ट टाइम हमने किया था ये आसन, वेयर वी लेंथन आवर स्पाइन, वी डिड ट्विस्टिंग. सो इससे हमारा क्या होगा, स्पाइन जो है वो डिकम्प्रेस्ड हो जाएगा, टेंशन रिलीज हो जाएगा, एंड देन पीपल कैन सिट. एंड people want to go more deeper, they can go for bhujangasana, asana which are focused on bending of the back. We can do forward bending, we can do backward bending, we can do side bending, we can do twist. So all the movements of the spine, if we practice every day, that will help us. Then with the hamstrings comes very important. ये जो हमारे hamstring muscles हैं बहुत जरूरी है. अब ये कैसे मूव होते हैं? जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं,
जब हम बैकवर्ड बेंड करते हैं, जब हम आसना करते हैं जहां हमें आगे झुकना है या पीछे बेंड होना है, तो हैमस्ट्रिंग मसल पुल होते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेचेस हम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर बॉडी। हमें अपने बॉडी को फोर्स नहीं करना है, जेंटल होना है। बट एवरी डे बिफोर साधना, if we invest 10 to 15 minutes in practices like last session we did, if anybody can just do that practice and do their sadhana, they will see that they are improving. And one thing, we cannot go from 20 minutes to 1 hour in a day. It's a very gentle journey. Sadhana is being gentle. Sadhana is not forcing being a hero and doing in one day. स्वामी जी गए थे कहीं साधना के लिए, तो उनके साथ कोई बगल गुफा में कोई साधना करने आया था। तो स्वामी जी ने उनको बोला कि आप तो बस आ गए हैं, ना कोई खाने का सामान है, यहाँ ठंड पड़ेगी, ना कोई ब्लैंकेट है, बारिश हो जाए। सो वो जो थे, ही वॉज लाइक दैट पर्सन कि मैं तो अब समाधि नहीं लेके उठूंगा, जैसे गौतम बुद्ध सीधे निर्वाण में होते थे, अब मैं तभी उठूंगा। फिर नेक्स्ट डे वो गायब ही हो गए, वो दिखे ही ना वहां पे। सो प्रिपरेशन, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव जर्नी, सो देयर इज नो रश। तो हर दिन अगर हम अपने शरीर को मजबूत करें, अपने मसल्स को मजबूत करें, आसना करें, अपने स्पाइन को फिट रखें, सो लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग्स, अपने हिप्स को मजबूत करें, तो फिर हम साधना पे लॉन्गर बैठ सकते हैं। और एक टिप, जब भी हम साधना करने बैठे, जो हमारा हिप है वो हमारे नी से हमेशा ऊपर होना चाहिए। So we should always sit either on a very, not very high, but a little raised space like a pillow or a meditative cushion. So if we follow this, I think so that will really help everybody to improve their asana. And it is a long Absolutely. journey. It is not a very shortcut. It takes a lot. When I started my sadhana, I could sit only for 15 minutes to 20 minutes, and my body wasn't. But with regular practice, now I can do more and that. So it's a journey. Amazing. Thank you so much. And I think that beautiful story that you shared is from the 13 months in Himalayas from Swamiji. So anybody who's interested in learning about Swamiji's own journey into sadhana, that is the book that you can read his it's an extension of his memoir, but yeah, The memoir something also have, I think so. I don't know, but Swamiji has said so. It's so beautiful. When we want to do something, we just want to do. In one day, we want to yes, become the top person there. But no, there's a beautiful saying, every expert once was a beginner. So that slow journey and gentle journey is important more than that reckless one. absolutely. Thank you. You've covered it so beautifully. Also, I think I can add this, Ankurji, that people who cannot sit on the floor, जो बैठ ही नहीं सकते चौकड़ी मार के और अगर वो चेयर पे बैठ रहे हैं, इट्स नॉट दैट कि उनकी साधना फ्रूटफुल नहीं रहेगी। सो Not एट at द all. एंड ऑफ द डे इट्स द डिवोशन, भाव, all of that. I mean, think of our sadhana app. We have moved away from a physical form of worship because they say that Mansik Puja is as powerful as a physical I puja, think it is at more least powerful. more powerful. Yes, absolutely. So, anybody who's sitting on a chair, anybody who can sit on the ground, they can all do these asanas and they can progress on their path of sadhana. And these practices are very safe for people who are on chair, who have back pain. They can be very gentle and be in this posture, breathing gently and move their body very gently. It will also help them with their pain and their bodies. So they can focus more on sadhana than their bodies. So Absolutely. Okay, thank you. We have two more questions, and I am very conscious of the time. Our next question is around breathing. So, a lot of people, you would have also seen, हम क्लब कर रहे हैं questions को, but बहुत सारे questions थे जहाँ पे they're saying कि there are ध्यान नहीं लगता when they are doing मंत्र चैंटिंग या फोकस नहीं रहता साधना के ड्यूरिंग एक इमोशनल इम्बैलेंस रहता है थॉट्स बहुत ट्रबल करते हैं जब हम लोग साधना करने बैठते हैं सो व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रीदिंग देयर एंड हाउ कैन वी यूज breathing to help eliminate those things on the path of sadhana.
So I think so. Just like when we started the session, I said one thing from Hut योग पर दीपिका that चलिए भारत चलिए चित्त. जैसे हमारे शरीर में वायु मूव कर रही है उसी प्रकार मन भी चलता है. तो ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारी साधना में. तो अगर जिन लोगों का मन नहीं लग रहा है या मन डिस्टर्ब है, बहुत सारे थॉट्स हैं, और मैंने एक क्वेश्चन और देखा, वो बैठ ही नहीं पा रहे हैं 10 सेकंड से ज्यादा. कोई साधना करने बैठ नहीं पा रहा, उठ जा रहे, बिकॉज इतना मे बी अ लॉट ऑफ एनर्जी, मे बी द एनर्जी इज नॉट ग्राउंडेड, मे बी वॉट एवर इट इज, लॉट ऑफ थॉट्स. सो जैसे हमने समझा जैसे ब्रीदिंग मूव करती है वैसे ही माइंड मूव करता है. इट्स लाइक इट फॉलोस. जहां भी सांस जाएगी मन आपका वैसे ही जाए. सो इट्स लाइक अ शैडो. हम उसको रोक नहीं सकते. सो एक चीज हम कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल. सो बिफोर साधना, अगर हमारे पास समय है, मैं तो बोलूंगा आज हमने जो अभ्यास किया, इट टुक अस हार्डली 10 minutes to 12 minutes. Okay, so people should do that complete practice, and then they start their sadhana. They will see a amazing result in their concentration, in their calming of the mind, और उनके thoughts, उनके जो thoughts हैं बहुत कम हो जाएंगे. और अगर वो दो अभ्यास करना चाहें, कि कोई दो प्रैक्टिसेस ही अगर हम कर पाए, तो मुझे लगता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, क्योंकि वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा मन और शरीर दोनों ही शांत होता है. तो वो कर सकते हैं. और लास्ट में भ्रामरी कर सकते हैं. भ्रामरी करने से इट वर्क्स ओनली ऑन, आप देखिएगा जब हम भ्रामरी करते हैं, ओनली द गुंजन इज फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, इट ओनली हैपेंस इन दिस एरिया. सो उससे क्या होता है, जो हमारा मन होता है ना, वो एकदम एक साथ एकत्रित हो जाता है, और वी आर एबल टू फोकस मोर. सो माई एडवाइस विल बी बिफोर साधना, डू ऑल फोर प्रैक्टिसेस, give 10 minutes, and if you can't do that, then do this two practices before. So I think so it will take care of all their issues, whatever they are going through. Amazing. आपने second वाला जो part था question का on the techniques, that also you covered. So thank you. I think this is it from our questions. Is there anything else you wanted to share, Ankuji? Anything from your side? I think so. Only one thing I would like to share, that practice. स्वामी जी हमेशा एक बहुत ही सुंदर बात बोलते हैं, जो मैंने उनके साथ इतने सालों से उनके गाइडेंस के अंदर मैंने समझा है, कि अभ्यास से बड़ा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस से बड़ा कुछ नहीं है. हम जब सुनते हैं कहानियां, हमें लगता है एक दिन में कुछ नहीं होता. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी एंड पावरफुल जर्नी. और स्वामी जी बोलते हैं, जपेत सिद्धि, जपते रहो जपते रहो जपते रहो जपते रहो, क्या पता कब दर्शन हो जाए. उसी प्रकार अभ्यास निरंतर अगर हम करेंगे, वी विल 100% सी द चेंज इन अस. एंड आई थिंक सो ओनली वन थिंग which makes a difference between an average human being to an expert human being or a powerful human being is that everyday constant practice. That's all. So I think so whatever we want to do in our life, if we practice this practices, it will not only help in sadhana, it will also help in becoming more productive in our work field. We conducted recently from Vedic Sadhana Foundation a powerful program in Mumbai for a tech company. So when we finished the program, most of them were like, "Oh God, this body is not the same after the program." Just after 1 hour of session, 2 hour of session, their body is completely in a different zone. So, so that is the power. So just think, if one day practice can give you that, then if you practice for years and years, what that can give. So only that. And Pradosh Sadhana is coming on 27th of December on Sadhana app masterclass on Pradosh. कि प्रदोष क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है. और मुझे नहीं लगता हम साल का एंड कर रहे हैं, नए साल में मूव कर रहे हैं, तो महादेव के बारे में, जिनका ना आदि है ना अंत है. So we'll go with his grace into the new year. So everybody, if you are here, you can join the masterclass on 27th December at 8 p.m. on Pradosh on Mahadev. So that's it from my side. And yeah, Thank thanks you to so much. everybody. So that's 27th, 8 a.m. IST, because we have a lot of people that are joining us Okay. globally. So we must always mention the time zone.
And I think आपने end में बहुत beautifully बोला about the practice and the consistency. And that's what we have done even at Vedic Sadhana Foundation. And Guji, you've been part of this journey over the last 1.5 year. I've been on this journey for the last 4 years. In fact, our anniversary, our 4th year anniversary for the Sadhana app is coming up on the 1st of March. And we started with a team of 4 people. Now we are a team of 70 people with so many offerings, 20,000 reviews and testimonials. So it's the consistency that, brings us all into work. And jo aapne Mumbai ka example diya, how amazing is that? I mean, I wake up reading reviews and testimonials and hearing about all the beautiful impact that we are creating into the lives of people. And of course, you are quite an integral part of ensuring that is happening on the ground, as well as all the team behind the scenes. So a lot of people see Ankurji, a lot of people see me. You also see Vikram Shastri, who's our COO. You do not get to see the 67 other people who are working behind the scenes at Vedic Sadhana Foundation. And all I can say is that we have professionals from all across the world. Everybody is so committed. I personally, in my last 15 years of working journey, have not seen a team come together like this. So we are here to serve you. We are here to serve the cause. Thank you so much for creating um, for using everything that we've created and spreading the word forward. That what powers the mission. And thank you. So, Ankurji, on that note, I think we can end. There is a note that I got from the team just to announce that we are not medical professionals, everyone. We are here to guide you on this journey. So, in case you are experiencing any medical issues, do consult professional advice because we will share with you from our experience from the scriptures, from the practices that Ankurji and the team has done, and the guidance of Swamiji, who is the authority, who's the brainchild, and who drives the work of Vedic Sadhana Foundation. But please do consult professional advice if And ever one in last doubt. question I saw, I thought I'm going to take that because somebody Please asked do. that, can we do this practices, breathing practices during periods? So besides Kapalbhati, we can do gentle, very gentle abdominal breathing. We can do Nari Shodhan and we can do Brahmi, even if you are on your periods. So be gentle and no jerky movements, no forceful breathing. So if you do this very gently, you are free to do this practice even during the period. So there is no need for that. Amazing. All right. So on that note, a very Jai Shri Hari, everybody. Thank you so much. Thank you, Ankuji. Thank you to the Okay. team that is up in the morning helping us here. And we will be back again. Thank you, Pranay. Thank you so Jai much. Shri Hari. Yeah.